Good morning, everyone. Welcome to the morning con call. First, we'll start with the derivative and technical update. On technical front, yesterday Nifty opened on a negative mode, then witnessed a volatile trading session ahead of Fed meeting announcement and closed in the red with a loss of 0.55%. However, in the yesterday's session, index has filled the gap area dated 20th September. So broadly now 17,400, which is a recent swing low, is a support level, while 18,100 will act as a resistance for the upside momentum. So if we see on the sectorial front, all indices yesterday closed in the red, except Nifty FMCG. So Nifty FMCG yesterday witnessed a buying interest and closed with the gain of 1.18%. Nifty Metal and Pharma Index were top losers. So if we see on the daily chart, Nifty formed a small candle with a lower high-low formation. For a today's trading session, like intraday part, if Nifty break yesterday's low or 17,600 levels, then some selling pressure will be witnessed and that use opportunity to buy a stock. While if Nifty sustain above 17,900 levels, then fresh buying can be seen. So broadly 17,400 and 17,900 will be the range for this week. On the Bank Nifty front, Bank Nifty to feel 28th September gap area yesterday and close in the red with a loss of 0.64%. Bank Nifty still looks strong. So Bank Nifty is trading in the range above the breakout levels of 40,200 levels. So now 41,800 and 42,000 levels need to cross for the upside momentum. So if that levels cross, then 43,000 can be possible in Bank Nifty and 40,500 will be the immediate support zone. Stocks like ICICI Bank, IndusInd Bank, Axis Bank, SBI, Canara Bank, BOB, Bank of Baroda and CUB can be added on every decline. On the now derivative front, Nifty future OI saw yesterday long liquidation. So a reduction of 0.04 million shares. So with outstanding position currently at 12.49 million shares. Advanced decline ratio was a negative. 4 stocks on the gaining side and 155 stocks on the losing side. PCR OI saw a downtick 0.95 compared to previous closing 1.15. Then major unwinding happening put option front at 17,800 and 17,600 strikes. And while on the call option front, major addition were seen in the 17,800 and 18,000 strikes. On the Bank Nifty future, total OI stands at 22.18 lakh shares. If we compare then against 24.54 lakh shares on the previous day. So which indicates long liquidation in the index with reduction of OI by 96%, that is 235k shares. On the FII data, FII future added a short position by minus 12,046 contract and overall net shorts by minus 37,057 contracts. So overall FII future long short ratio is a 34.46%. And long buildup was seen in the FMCG space like ITC, Britannia, and Nestle India. So that's it from my end. Now I will hand over to Archana ma'am for further research update. Thank you and over to you, ma'am. Thank you, Kshitija. Good morning, team. So a few updates from my side, starting with Adani Ports. The company has won rupees 25,000 crore project to the Tajpur Deep Sea Port in West Bengal. The Greenfield project will see rupees 15,000 crore utilized towards port development and the rest towards the building related infrastructure. On SpiceJet, the aviation regulator DGC has extended the 50% limit on SpiceJet's number of flight departures until October 29 as a matter of abundant caution. The airline will be subjected to enhanced surveillance during this period, DGC has said. So that comes as a negative development on the SpiceJet front. On Vedanta, the Union Cabinet has approved tweaks in the scheme for semiconductors and display manufacturing ecosystem. Under the modified program, an unicorn fiscal support of 50% of project costs shall be provided for semiconductor fabs across the technology nodes, while the reform scheme will also provide fiscal support of 50% of the capital expenditure for setting up of compound semiconductors, silicon photonics, sensors, discrete semiconductors fab. So that is a positive development on Vedanta's front. The Union Cabinet has approved rupees 19,500 crore production linked incentive scheme on National Program on High Efficiency Solar PV Modules.
with an aim to attract 94,000 crore investment in the sector. So that is positive for Reliance Industries, Adani Enterprise, and Tata Power. On Ashoka Buildcon, the company has won a project worth rupees 258 crore from Southwestern Railway for construction of new BG line, including electrical and telecommunication works on engineering, procurement, and construction mode. The project is to be completed within 24 months. On Heritage Ford, the board of the company will meet on September 30 to consider and approve raising of funds by way of issue of equity shares on the right issue basis. PB Fintech, the company has invested around 650 crore in its wholly owned subsidiary, Policy Bazaar Insurance Brokers, and another rupees 250 crore in wholly owned subsidiary, Policy Bazaar Marketing and Consulting. On KPI Green Energy, the company has received a new order from Green Lab Diamond Surat for executing wind solar hybrid power project of 5.4 megawatt capacity under the captive power producer business segment. On HDFC Bank, the bank has entered into a long-term partnership with London Stock Exchange Group Refinitiv for digital transformation, new customer acquisition, and reducing costs. So it is one of the world's largest providers of financial markets data and infrastructure. The long-term strategic agreement will support digital transformation and innovation programs across the whole business in India. We believe this is positive for HDFC Bank, and we have currently buy rating on the stock with a target price of 1860. On ITC, the company has signed up 5 boutique properties under the brand Story at popular leisure destinations of Goa, Dharamshala, Solan, Sirmur, and Kufri. So this brand, so with this 5 addition, we believe the company is poised to expand their presence in hospitality space. And given that the segment is seeing very strong demand and the ADRs are going up, we believe that is again positive for ITC. Currently, we have buy rating on the stock with a target price of 377. And lastly, on KPIT Tech, the company has announced that the board has approved the acquisition of 4 companies of the Technica Group for a total consideration of around 640 odd crores as a fixed consideration and another 240 crores as a variable consideration, valuing the company at 1.8 times sales. So this acquisition is expected to be EPS accretive for KPIT Technologies. Although we don't have formal coverage on the stock, we believe in the mid-cap IT space, this looks as a good bid for decent gains going forward. So that's it from my side. Now I hand it over to Brijesh to take it from here. Thank you, and over to you, Brijesh. Good morning, team. Few more news updates from my end. So yesterday we saw the Fed policy. So they are increased the rate hike by 75 basis points. So now they are at 3.25. So there is expectations in the coming months they will be rising more interest rate, possibly more 0.75% or 0.5%. They are forecasted that they will be reaching to 4.6% in the financial year 2023. This is basically to handle the inflation, which is going very far in the US. So interest rate hike was already done the 0.75 basis point. Again, yesterday we saw that there was most of the PLI schemes which were approved by the government. One was like within that was a display manufacturer. So they are given the benefits of this. So Subros is something which we think will be benefited from this. Again, the Union Cabinet has approved the national logistic policy, so that approval has come to yesterday. So we continue to maintain that Mahindra Logistics and Blue Dart, these are the companies which will see the good amount of buying from this level. So this remains the positive for the counter. And there is a news on Zomato. It looks like the investors are very skeptical about the Zomato, which is entering into commercial business for the grocery thing. So there is a question whether this is going to be a positive outlook for the Zomato, which might be a little bit concerned. On the palm oil, there's an update that Indian palm oil export has been on a rise. So basically in 2022-23, there could be a jump of 9% from a earlier rise from the domestic consumption. And this would be a little bit concerned. And this is
This is what it has been recorded in the writers. So, and there is one update on the railway. There is a news that the tracks will be redesigned to support the high-speed mobility and whenever there is a crossing of the track, so that the tracks can take the pressure. So basically, strength of the it has to be increased to the tune of 25 tons, so that this goes with the view of the Vande Bharat, which is the which is a new this thing. The speed of this train is 220 kilometers. So there are few companies like JSPL and SAIL will be the some which will be benefited with this. So again, ahead of this Fed rate hike, there was a fall in iron ore prices. So according to most of the commodities in a commodity market saw some kind of declines in the iron ore prices. So this was a cautious ahead of this Fed uh, rate hike. And there is one update on the Triveni turbines. The sugar firm Triveni Engineering Industries on Wednesday said that company has sold its entire 21.85% stake in Triveni turbines for about 1,600 crores. The shares have been sold to Rati Shevan, on one of the promoters of the Triveni turbines, and a few institutional investors. Then one more update is on this Canfin Homes. The NBFC had decided to relieve its managing director and chief executive officer Girish Kaushik on October 2020, this October 2022. The company has said that this won't affect the company's operation and business. So that's all from my end. I over to Shikija for more update. थैंक यू गुड मॉर्निंग एवरीवन. हम इस कॉल को एक बार हिंदी में कर लेते हैं. तो स्टार्ट करेंगे अडानी पोर्ट से. अडानी पोर्ट को एक ऑर्डर मिला है 25,000 करोड़ का, जिससे वो तंजावुर डीप सी पोर्ट वेस्ट बंगाल में वो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट स्टार्ट करेगी, जिसमें 15,000 करोड़ वो यूटिलाइज करेगी पोर्ट डेवलपमेंट के लिए और बाकी का वो यूज करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए. सेकेंड अपडेट है स्पाइसजेट के ऊपर. स्पाइसजेट में जो एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने उन्होंने जो उनकी 50% की जो कैपिंग है उसको एक्सटेंड कर दी है अक्टूबर 29 तक, और नंबर ऑफ फ्लाइट डिपार्चर्स भी लिमिटेड कर दी है. इसके चलते हमने देखा कि कल परसों ये भी न्यूज में था कि स्पाइसजेट के उन्होंने 80 एम्प्लॉयज को लीव विदाउट पे या लीव पे भेज दिया है. तो स्पाइसजेट्स के लिए आगे मुश्किलें बढ़ रही है, तो हमें स्टॉक से थोड़ा दूर रहना चाहिए और हमें अगर कहीं भी एग्जिट मिलता है तो निकलना चाहिए. वेदांता में भी ये न्यूज है, यूनियन कैबिनेट ने उन्हें अप्रूव कर दिया है एक स्कीम फॉर सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग के लिए. और सेकेंड ये अंडर मॉडिफाइड प्रोग्राम रहेगा जिसमें यूनिफॉर्म फिजिकल सपोर्ट 50% मिलेगा प्रोजेक्ट कॉस्ट पे जो सेमीकंडक्टर्स वो बनाएंगे, और ये स्कीम उन्हें सपोर्ट करेगी फॉर सेमीकंडक्टर्स. नेक्स्ट है रिलायंस इंडस्ट्रीज और टाटा पावर और अडानी एंटरप्राइज को एक यूनियन अप्रूवल मिला है 19,500 करोड़ का PLI. ये बेसिकली नेशनल प्रोग्राम रहेगा जो कि हाई एफिशिएंसी सोलर PV मॉड्यूल्स डेवलप करेंगे, और ये सेगमेंट में देखा जाए तो 94,000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट वो अप्रूवल रहेगा. अशोका बिल्डकॉन को भी एक अच्छा बड़ा ऑर्डर मिला है 258 करोड़ का, साउथ वेस्टर्न रेलवे से मिला है कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू BG लाइन के लिए, और इसमें इलेक्ट्रिकल और टेलीकम्युनिकेशन वर्क भी रहेगा और इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन मोड पे रहेगा, TPC वर्क में ये रहेगा ये. और द प्रोजेक्ट ये है 24 महीने में पूरा कंप्लीट होगा. हेरिटेज फूड्स के बोर्ड ने भी कहा कि कंपनी 30 सितंबर को मिलेगी और कंसिडर करेगी फंड रेजिंग अप्रूवल के लिए इक्विटी शेयर्स के लिए, और ये राइट्स इशू बेसिस पे हो सकता है. PB इन्फोटेक में कंपनी ने कहा है कि वो अराउंड 650 करोड़ इन्वेस्ट करेगी ये होली ओन सब्सिडी पॉलिसी बाजार इंश्योरेंस ब्रोकर, और अनदर 250 करोड़ वो अपनी होली ओन सब्सिडी पैसा बाजार मार्केटिंग कंसल्टिंग के थ्रू करेंगे. KP एनर्जी को भी एक ऑर्डर मिला है ग्रीन लैब डायमंड से, जो कि सूरत बेस्ड है, फॉर एग्जीक्यूटिंग विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट के लिए 5.5 मेगावाट का प्रोजेक्ट रहेगा, और इसमें कंपेटिटिव प्रोड्यूसर बिजनेस सेगमेंट रहेगा. अभी देखेंगे एचडीएफसी बैंक ने एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप जो कि लंदन स्टॉक एक्सचेंज के ग्रुप है रेफिनेटिव उनके साथ किया है. डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और नई कस्टमर एक्विजिशन और उनकी कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए बेसिकली ये पार्टनरशिप की गई है. रेफिनेटिव देखा जाए तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोवाइडर है फाइनेंशियल मार्केट डेटा और इंफ्रा के लिए, और ये स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट सपोर्ट करेगा इनके डिजिटल और इनोवेशन प्रोग्राम के लिए, पूरे बिजनेस जो है इंडिया के लिए.
सो एक ओवरऑल ये पॉजिटिव न्यूज रहेगी एचडीएफसी बैंक के साथ। करंटली हमारी इसके ऊपर बाय रेटिंग है 1860 की प्राइस टारगेट के साथ। होटल सेगमेंट में देखेंगे तो आईटीसी होटल ने साइंड अप किया 5 नई बुटीक होटल्स प्रॉपर्टी जो कि स्टोरई पॉपुलर लेजर डेस्टिनेशन गोवा में है, धर्मशाला में है, सोलन में है, सिरमौर में है और कुफरी में। स्टोरी गोवा और स्टोरी जो धर्मशाला वो ऑपरेशनल है और बाकी की जो है जो कि है वो ऑपरेशन में आने वाली है। और आईटीसी होटल्स का देखा जाए तो 120 प्रॉपर्टीज अक्रॉस इंडिया कंट्रीब्यूट करते हैं 2 to 3% उनके रेवेन्यू के लिए। आईटी सेक्टर्स में दो न्यूज है, टीसीएच और ज्यूरिस इंश्योरेंस का जो जर्मन कंपनी उन्होंने अनाउंस किया है एक्सपेंशन अपनी पार्टनरशिप के लिए। टीसीएस ने पार्टनरशिप की थी 2016 में और ये उन्हें हेल्प करेगा इनको अडॉप्ट करने के लिए क्लाउड और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज के लिए जो कि स्ट्रीमलाइन करेगा और एक ये ओवरऑल पॉजिटिव डेवलपमेंट रहेगा टीसीएस के लिए। पीपीडी टेक्नोलॉजीज को भी अनाउंस किया है कि उनके बोर्ड ने एक्विजिशन किया है 4 कंपनी जो कि टेक्निका ग्रुप है। टोटल कंसिडरेशन 640 करोड़ के आसपास का है और ये फिक्स कंसिडरेशन है, इसमें से 240 करोड़ वेरिएबल कंसिडरेशन रहेगा। कंपनी की वैल्यूएशन देखा जाए तो 1.8 टाइम सेल्स है और ओवरऑल देखा जाए तो वैल्यूएशन वाइज कंपनी है, वैल्यूएशन एक्रेडिटिव है और एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है इस कंपनी के लिए। सो वैसे हमारे इसके कोई फॉर्मल कवरेज नहीं है बट ये स्टॉक के लिए पॉजिटिव है। नेक्स्ट हम देखेंगे विप्रो के ऊपर। विप्रो की जो विप्रो ने 300 स्टाफ्स को अपनी टर्मिनेट कर दिया सर्विसेज के लिए। बेसिकली ये जो मून लाइटिंग के चलते उन्होंने कंपनी के पेरोल से उन्हें निकाल दिया गया है और ये फॉर्म के एग्जीक्यूटिव रशीद प्रेम जी ने कहा है कि मून लाइटिंग को बहुत वो सीरियसली ले रहे हैं और कंपनी की जो वायलेशन या कुछ जो भी रहेगी उसको वो डीपली इंटीग्रिटी के लिए देखेंगे। नेक्स्ट कैंसिल होंगे जो एनबीएफसी के जो सीईओ है करंटली जो गिरीश कौशगी उन्हें 20 अक्टूबर को रिलीज कर दिया जाएगा और वे 20 अक्टूबर तक ही रहेंगे और इसके चलते उन्होंने कहा कि रेजिग्नेशन उनकी जो कंपनी के बिजनेस पे और ऑपरेशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं करेगा। रेलवे मिनिस्ट्री ने कहा रेलवे मिनिस्ट्री ने कहा कि वो जो एक रीडिजाइन करना चाहते हैं ट्रैक जो कि सपोर्ट करेगा हाई स्पीड मोबिलिटी और मेंटेन करेगा हाई स्पीड ट्रेन के लिए जो कि क्रॉस ओवर के लिए काम आती है। ये स्ट्रेंथ बढ़ाएगा रेलवे ट्रैक के लिए। बेसिकली ये जो पूरा ये कर रहे हैं वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए कर रहे हैं जो कि 2.2 किलोमीटर और बहुत ही हाई स्पीड में चलेगी। तो इसके लिए कंपनी जेएसपीएल सीएल को आइडेंटिफाई किया गया है। यूनियन कैबिनेट ने भी अप्रूव कर दिया है एनएलपी पॉलिसी। सो ये क्या पॉजिटिव रहेगा लॉजिस्टिक कंपनीज के लिए। मैकमा इंडिया ने एक्वायर किया है कोको टेक्नीशियन लैब्स को। और सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। थैंक यू फॉर मॉर्निंग कॉल यू मे नॉट डिस्कनेक्ट।